how many of you have seen the Matrix movie? नहीं देखी? Homework. You people find out that whatever life we are living, actually it's a video game. There are people who might be smiling, but deep inside they may be sad. A philosopher must have a competency to see beyond what is visible to eyes. If it is temporary, this means that if I get attached myself to this temporary table, will I be happy or sad in the long run? That darshan doesn't mean just viewing or seeing. It means, so philosophy has 5 major branches. One is metaphysics. Metaphysics means something which is beyond physics. So physics tells you that if I drop it, it will go down because there is gravity. लेकिन अगर ये उड़ जाए तो क्या होगा? कुछ नया, which will need explanation. Why, where, when, how? Why? What is this world made up of? Whether this world is made up of atoms, or is this world just made up of sensations, or this world is just made up of fluid, or it is energy at the end? All these topics. ये दुनिया है क्या, रियलिटी क्या है, और ये किस चीज से बनी है, क्या ट्रूथ है, क्या रियलिटी है, ये सब किस में आ जाएगा? सोल है कि नहीं है? मेटाफिजिक्स. वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वन है या देर आर मेनी रियलिटीज like atoms or monads we will study again. That will come under if there is God or not, or whether there is heaven or not, metaphysics. Hell or not, metaphysics. What is the fundamental unit of life? Metaphysics. All these things come under metaphysics. But before you know metaphysics, you must know. अभी ऐसा लग रहा हो ना बड़ा मुश्किल टर्म है. आफ्टर सम टाइम दिस विल बी योर ब्रेड एंड बटर. फिर तुम लोग ऐसे थोड़ा ना शो ऑफ करने के लिए, है कुछ नहीं, शो ऑफ करने के लिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ऐसी बातें करोगे. आई थिंक योर मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट राइट. तो तुम्हारा दोस्त भी कह रहे क्या पढ़ी, बड़ा इंटेलिजेंट हो गया यार ये तो भारी भारी बातें कर, है कुछ नहीं. It's just this, ठीक है. But and before we move on to this, it's very important to understand the mindset of a philosopher. Who becomes philosopher? इसके पास कोई काम? हाँ नहीं, of course. तो देखो philosophy is the what do you say, is an activity which is done by people who have the luxury of thinking. जो सोच सकते हैं ना, जिनके पास टाइम भी हो, जिन्हें डेली काम पे ना जाना हो, ऐसे सुबह उठाओ, बैग उठाओ, भागो, ऑफिस में काम करो बहुत सारा, फिर वापस आओ, फिर बच्चे संभालो, खाना बनाओ, टाइम है फिलॉसफी का. तो किसके लिए है फिलॉसफी? जनरली people who can think, who have the time to think. So this means that people who can think, वो लोग कैसे कैसे लोग होते हैं? Do they want to be mediocres? Do they want to live like other random middle class people? No. What do they want to do? Become famous, okay? जिसका पेट भरा हो, हाँ. नहीं, फिर भी फिलोसोफर बनने के पीछे क्या मोटिवेशन होता होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके. हाँ, क्यूरियोसिटी. हाँ देखो कुछ नहीं, फिलोसोफर्स आर पीपल हु वांट टू टेल द वर्ल्ड तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं सोचते हैं. वी डोंट गेट स्टक इन द मंडेन. व्हाट इज मंडेन? डेली खाना पीना घर जाना. नो, philosophers are people who talk about big things like God. अच्छा, जोक सुना है? वो वाला जोक सुनाया था क्या मैं तुम लोगों को? एक नहीं सुनाया था? अच्छा, एक बार there were like two, सुनाया था? अच्छा, there are like so two men are talking among themselves. One man says that
you know, I personally, I'm very strong, but I do not argue with my wife. कहता है क्यों? कहता है somehow she doesn't, she doesn't let me take any decisions. कहता है यार, दूसरा कहता है यार मेरी तो बड़ी sorted है life, है ना? We don't fight because all the small decisions are taken by my wife and all the big decisions are taken by me. Small decisions like बच्चे कहाँ जाएंगे, घर कौन सा लेना है, प्रॉपर्टी कौन सी खरीदनी है ना, खाना क्या, every small decision of life will be taken by wife and I will take big decisions like रशिया यूक्रेन में वॉर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. Understood? So philosopher's job is not mundane. They talk about big decisions of world, like whether there is God or not, whether there is soul or not. So philosophers of course will develop the habit of expressing themselves in difficult language, है ना? लैंग्वेज तो थोड़ी सी उनको रखनी पड़ेगी ना, क्यों? हाँ, वरना तो हर आदमी ऐसे हर चलता फिरता फिलॉसफी करने लगेगा. बट फिलॉसफी इज नॉट फॉर एवरीबडी. फिलॉसफी रिक्वायर्स दैट शो ऑफ एलिटनेस. शो ऑफ हो या नहीं वो बात अलग है, लेकिन देयर इज दिस इन लिंग्विस्टिक्स इट इज शोड. सो epistemology is that branch which tells us how can we know the metaphysics, how can we know what is real. So should we experience it or should we think it? Should we directly see it with our five senses or should we make inferences? Should we know the reality by comparison or should we believe the testimony? Or should we also think about comparison in a different sense, as well as should we or can we know the absence of something or void? क्या हम absence को भी जान सकते हैं? So epistemology means how we can know. कुछ जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जाने कैसे. तो जो जाने कैसे वाला पार्ट है वो क्या है? एपिस्टेमोलॉजी. ये एपिस्टेमोलॉजी वेस्टर्न और इंडियन में बहुत अलग रहेगी. वेरी डिफरेंट. वेस्टर्न वेरी सिंपल, वेरी व्हाट यू से, सीधे लोग. दे टॉक्ड अबाउट ओनली टू, रीजन and experience. Very simple. Indian philosophy is very matured and developed. They will give us 6 ways of knowing the reality. 6 ways of knowing the reality. We will see what are they. Next is ethics, which is part of your GS. Of course we don't study it here, but the implications of metaphysics and epistemology on ethics वो naturally इसमें cover हो जाएगा. Then is logic. Logical reasoning is part of your CSAT, and there you just do some sums and equate, or what do you say, some questions, but it's not the pure logic we study in UPSC. And then there is aesthetics. Aesthetics again is not part of our curriculum. तो इन दोनों का रोल कम है, इन तीनों का ज़्यादा है. हम ये 2 पढ़ेंगे बस. तो कितनी फिलॉसफी पढ़ेंगे हम टोटल? ओनली 2 मेजर हेडिंग्स, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी. इसके बाहर हमारा वही स्कोप ही नहीं है. तो हमारा स्कोप पहले तो फिलॉसफी का ऐसे कम हो गया. फिर इंडियन में कितनी फिलॉसफीज हैं तो बहुत सारी, लेकिन हम कितनी पढ़ेंगे? कल को somebody will say, some चाचा और मामा, when you meet in your family and they will like, philosophy पढ़ रहे हो? चलो गांधी जी की फिलॉसफी बताओ, है ना? या फिर विवेकानंद की फिलॉसफी बताओ, विवेकानंद. तो यू विल से बता तुम्हें देंगे, लेकिन सिलेबस में नहीं है. है ना? तो थोड़ा बहुत विवेकानंद जी तो न्यू वेदांत में आ जाएंगे, लेकिन दिस इज नॉट आर डायरेक्ट सिलेबस एज सच. ठीक है? इंडियन फिलॉसफी में इन सबको हम सोशियो पॉलिटिकल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बट दैट टू इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट. गांधी जी देखेंगे सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में, उन सब में. बट उनकी मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट. फाइन.
तो हमारा सिलेबस समझ में आ गया कितना है? पक्का? ठीक है, कुछ फीचर्स लिखे? लिखे? हाँ लिखे, लिख लो यार, थोड़ी चीजें तो लिख लो, 2-4. वी विल डिस्कस एंड वी विल राइट. कॉपी नहीं लाए? लाए? अच्छा, फर्स्ट राइट फिलोसफी. फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम एंड, अरे नहीं, जस्ट दी इंट्रो. लिखो तो सही भाई, कल को तुम बोलोगे फिलोसफी नहीं आती हमें, मैम ने बताई नहीं. फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, बट इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. But it is a Western concept which is based on curiosity. But it is a Western concept which is based on curiosity and essential urge to know the reality. And essential urge to know the reality or world around us. Know the reality or the know the reality or the world around us. ठीक है? अच्छा, जिन बच्चों का छूट जाएगा वो क्या करेंगे? If you are not able to cope up with the speed, you will do what? You will make friends. Why? You need to maintain the speed, है ना? So though we will not be writing all the notes, I will be giving you the notes, but whenever and wherever time we will get, we will be dictating, and whenever I dictate fast and in a speed, so that you realize that how fast you will have to write in mains examination. ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन में तेज लिखना पड़ता है, और अभी तक भी बहुत कम बच्चे हैं जो पुराने बैच में भी स्पीड कोप अप कर पाए हैं. स्पीड इन द सेंस मतलब है 25%, 30, 50 मान लो, 50, अच्छा चलो 80% लोगों ने स्पीड कोप अप. अच्छा, दिल लोग कह रहे नहीं हम 100% हैं, ठीक है, पर काफ़ी फ़ायदा मिलता है ना. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन मेन्स यू विल हैव टू राइट वेरी फास्ट, सो practice wherever and whenever you can. Okay, next, Indian philosophy. Indian philosophy. Philosophy is translated as darshan. Philosophy is translated as darshan in Hindi, but the concept of darshan, it is the concept of darshan is much wider and deeper, much wider and deeper than the concept of philosophy. Next point, darshan etymologically means, etymologically मतलब whatever the word means, शाब्दिक अर्थ है ना. If you break the word, what does it mean? So etymologically, darshan etymologically means vision, which is an instrument to know the truth about ultimate reality. To know the truth about ultimate reality. And this search is known as
search is known as Tattva Darshan. This search is known as Tattva Darshan. Tattva means any material, particle, anything which is there. Tattva, existence. ये तत्व है, सब कुछ तत्व ही है. All the anything which is existence is tattva. This means that when we talk about darshan, it is different from the term philosophy. Philosophy कैसा है? Superficial है. लेकिन दर्शन, it's much wider and much deeper as a concept. Achha, when we say to see means what? This table chair? Right? To see what? To see what? मैटर तो आंखों से दिख जाएगा ना. मैटर के बियॉन्ड देखना या टेबल चेयर के बियॉन्ड देखना. अच्छा, तुम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझाती हूँ. ऐसे समझो. हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो. So by eyes you see smile, but the poet can know the hidden sadness behind that smile. Can you understand this? अच्छा, किस किस को ये बात समझ नहीं आ रही क्या? बड़े सीधे रहे हो बच्चे. हाँ. So this means that there are people who might be smiling, but deep inside they may be sad. It happens. It happens na. So if a sensitive person will understand that even though this person is smiling, but the original feeling is not of happiness. The original feeling is sadness. कभी ऐसा हुआ मम्मी पापा को दिखाने के लिए खुश दिखाया हो? तो वही समझ में आई? So it needs a kind of a competency to see beyond that smile. Similarly, philosopher must have a competency to see beyond what is visible to eyes. Eyes वाले तो सारी चीजें नॉर्मल आदमी देख सकता है ना. Any mediocre normal person can see, but it takes the philosopher's competence and eyes to see beyond what is visible, what is usual. उसके पीछे क्या है? Now a philosopher will talk about, या फिर जिसे कहना चाहिए philosopher नहीं कहना चाहिए, दर्शन या विद्यार्थी, दार्शनिक है ना. So दार्शनिक, what does that darshanik, what kind of competence that person should have? So when they see this table and chair, they should be able to talk about whether this table is permanent or it is a temporary. If it is temporary, this means that if I get attached myself to this temporary table, will I be happy or sad in the long run? So should I get attached to this table? मेरी table है नहीं. So this means that it is the philosopher's vision, or this is the philosopher's competence to just not see the table but also see what is behind. Concepts like permanence, temporary, what is the reality, whether it is atomic or whether it is non-atomic. Atoms may just be energy points, isn't it? ये सारी चीजें देखने के लिए क्या चाहिए? A specific kind of vision. And when we say darshan, it is that specific kind of vision. देखना और दर्शन करने में अंतर है. देखना means normal people. Darshan means philosophy. So it is that vision that a philosopher must have. So this means, so when you people will be studying philosophy, will you just see the table and say table तो है ही मैम, कैसे गायब हो जाएगी? Of course गायब नहीं हो. लेकिन
फिलोसोफर और फिलोसफी स्टूडेंट का क्या एक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए? डू नॉट गेट जस्ट ब्लाइंडेड बाय दिस. इफ देयर इज अ ट्रुथ मे बी बियॉन्ड, तो वो उसके बारे में भी बात. Like if two people are talking, one person says they are both in sand in a desert. So one person is like, वहाँ पे देखो वहाँ पानी है. The other person says, पानी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता. There cannot be water. The both of them are fighting. The other person says, maybe there is a water. Let's go and check. Possible ही नहीं है. This means कि कभी जो दूसरा बंदा है वो क्या है? Optimistic. So that person is just, of course, they will, if they go and check, और supposedly पानी निकल आए तो. So philosophers are mostly optimistic. They talk about mostly, not always, mostly. This means when we see the reality, we talk about it and we try to talk about it in a positive sense. Mostly, not all philosophers are optimistic. There are some pessimistic philosophers also. है ना, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे. अजित केश काम्बली और all of these people you will study, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा हिस्ट्री में लेके. ठीक है, कमिंग बैक, दर्शन समझ में आ गया? That darshan doesn't mean just viewing or seeing. It means thinking, visualizing beyond your sense. जो दिख रहा है उसके beyond भी सेंस करना. How many of you have seen the Matrix movie? देखिए, नहीं देखी? Homework. First homework of philosophy class. Today go back and watch Matrix movie. समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं, देख लो, मैं समझा दूंगी. ठीक है. So in essence, supposedly, there is a reality. आपको पता चले, if you know, you people find out that whatever life we are living, actually it's a video game, but the reality is something else. If supposedly, so normal person will always be looking at the video games walls, video games houses, and they will be happy. But it requires the competence of a philosopher to see beyond, that maybe we are in a video game. And if the thought comes that maybe we are in a video game, then the person starts thinking. तो जो revolutionaries होंगे thought process में, innovators होंगे, they all are actually philosophers. Great science. If you are good in science, you will be good at philosophy. Contradictory but true. Because more logical your mind is, more better you can think and learn and know and understand philosophy. ठीक है, दर्शन समझ में आ गया? दर्शन का मतलब देखना नहीं है.